an international courier service. Be outside in office or in college or in university, we come home and we've got to kind of regress. So you're forcing your child to kind of lead this double existence, and it's okay. So I think that there's too much that we brush under the carpet as society, whether it's depression, whether it's sexual abuse, whether it's addiction, whether it's female infanticide. And as a society, we need to kind of wake up and talk about it more, because if not, this whole thing is going to crumble like a pack of cards. Because I think Indian spirituality is seeming as bogus in this day and age as most other things. You know, I mean, I'm sorry to say, I was in Russia recently, and I experienced more spirituality in a strip bar in Russia than I would in most places of worship in this country. And there's something more dignified about a woman who sits up there and decides to sell her body out of choice, as opposed to the kind of hypocrisy that we lead on a daily mass-based level. So I think it's really about us having a really good look at ourselves as society and telling each other that somewhere we failed ourselves and each other, because we've lost that bond. We've lost that human connect. And what is that human connect? To understand that, hey, the other one feels as much self-doubt as I do, is as vulnerable as I am, is as fearful as I am, and just kind of reaching out, holding hands, and bleeding a little bit together here. And understanding the normalcy to go through fears, anxieties, low feelings. It's okay. We are not pagal. We are not crazy. And even if we are crazy, I often say we psychologists are crazy. I mean, we are pagal. I have to say, my children tell me. My children often who do you guys go to? We also take... When you're depressed, who do you go to? We also seek help from our friends. See, it's because it's very important to go crazy. My kids often tell me, Mom, you're turning crazier as you're growing older. So it's okay not to be okay. Yeah. Right? Absolutely. Absolutely. Wow, I like that. It's okay not to be okay. Well, talking about that, I'm going to open it with our friends from the media. We'd like about 2-3 questions to be thrown at our dignitaries. You just need to lift your hand up and you can shoot your question. पूजा जी, बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से आपने डिप्रेशन के बारे में हमें बताया। 2 सवाल है मेरा आपसे। पहला ये कि हम देखते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह के टॉपिक पर फिल्में बहुत ही कम बनती है, तो हमने देखा कि बहुत ही ध्यान से आप ट्रेलर देख रही थी। पहला ये कि ट्रेलर आपको कैसा लगा, और दूसरा ये कि ये मामी फिल्म फेस्टिवल के जरिए ये फिल्म दिखाई जाने वाली, तो क्या आप देखना चाहेंगे और आप चाहेंगे कि इस तरह की फिल्में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में और भी बने, जिसे कि इस तरह से जैसे कि आपने जिया खान का एग्जांपल लिया कि इस तरह से? एक तो मैं ये कहूँगी कि आई थिंक कि ये बहुत ही एक ब्रेव शख्स है जो यहाँ पे बैठी है, बिकॉज इट्स नॉट, आज के दौर में फिल्म बनाना ही इतना मुश्किल काम है कि यू हैव टू बी अ मैसोकिस्ट टू वांट टू डू दैट एंड देन टू गो आउट देयर। अभी हम ऐसी बातें कर रहे थे कि एक तो फिल्म बनाते हैं, उसके बाद में जाके आपको इम्प्रेस करना पड़ता है, आप लोगों को बोलना पड़ता है कि हमारी बातें जो है जरा प्लीज ऑडियंस तक पहुंचा दे जरा शिद्दत से, ताकि कोई आके एक टिकट खरीद ले। तो वो जो है ना ज्यादा मुश्किल होता है फिल्म बनाने से। बट दैट्स व्हाई इन दिस डे एंड एज अभी हमारे फोकस कॉमर्स पे इतनी है। टू मेक अ फिल्म लाइक दिस with put your money behind it, to put your money where your mouth is, I must say it's not easy. And I think तब कभी-कभी कोई पागल औरतें ऐसी काम करते हैं that you need to be slightly crazy and a woman to be able to do this. But I think we need more of this. जैसे for example, I mean, मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी अर्थ के बारे में, बोल रही थी एक सीन, जैसे स्मिता पात्र का जो कैरेक्टर था, अभी वो परवीन भाभी के रियल लाइफ एक क्राइसिस पे बेस्ड था। सो इनफैक्ट जस्ट टुडे, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे किसी ने एक छोटा सा एक प्रोमो बनाया था इन्वॉल्विंग भट्ट साहब, एंड उसमें परवीन भाभी का उन्होंने एग्जांपल यूज किया है। तो भट्ट साहब ने मुझे मैसेज किया एंड सेड कि कैन यू इमेजिन वी नेवर थॉट एट वन टाइम that what is supposedly the tragedy of our life will be used so many years later as an example to get people to understand what the ailment is. तो जैसे रोग मैंने बनाई थी एक फिल्म इरफान खान के साथ में, और that was before Angelina Jolie kind of focused her gaze on him. So India had not woken up to Irfan Khan's sexiness yet. But उसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा है, और पहला जो सीन है फिल्म में, it opens with a man who's sitting in front of a psychiatrist, और वो बोल रहा है कि कल तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मार डालूं, खुदकुशी कर लूं, मगर नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा जो असिस्टेंट है होली था, तो उसका होली जो है बर्बाद हो जाएगा। तो ही इज़ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। एंड वो पुलिस ऑफिसर है, हर दिन वो बहुत ही ब्लीक सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के साथ डील कर रहा है। तो क्यों जिए भाई?
उसका एक ये थॉट है. सो आई थिंक कि एक तो हमें ये चीज़ निकालनी चाहिए हमारे दिमाग के जहन से कि ये जो है ना, लोग सोचते हैं हिंदुस्तान में कि डिप्रेशन जो है यार वो एक अमीर, आप अमीर हो तो आपके पास ये मतलब ऐशो आराम है कि आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, हमें तो जाके काम करना पड़ता है. इट्स नॉट समथिंग दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द एलीट और द रिच और फेमस. सबको होता है यार, सबको हो सकता है, सबको है. यू नो आई मीन हु इज तन्हाई जो है, अगर आपने महसूस नहीं किए तो आप जिंदा ही नहीं हो मेरे दोस्त. I don't think that is possible for you have not to feel lonely at some point of your life. So I think that हाँ, मैं most certainly सड़क 2 हम बना रहे हैं. सड़क 2 जो हम बना रहे हैं, संजय दत्त को ऐसे एक दौर में पकड़ रहे हैं जैसे वो आज के दौर में हैं. तो we are dealing with the issue of depression, मगर कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं eventually हम. तो yes, we have to make our point, but we have to choose a canvas. जैसे हम बातें कर रहे थे कि why didn't she make a documentary out of this? But I think जब आप एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हैं, आपकी बात कहीं कभी ज़्यादा आगे पहुंचती है, because you kind of normalize it. So I applaud this and I am all for, that's why I'm here. I'm here to support these women. I think that it's a very very brave decision. And I think कि हम सबको अगर हम जब ये देखते हैं और हमको लगता है कि कोई बात है, तो फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम इस फिल्म के मैसेज को आगे कहीं ना कहीं पहुंचाए. अगर लगते कि बात नहीं है, मत पहुंचाओ, मगर दिल से करो, वरना मत करो यार. बिकॉज ये फिल्म जो है, जो मैंने देखा, ये दिल से बनी है. You know, that's why we can sit and talk like this. सुचित्रा जी एंड शैला जी, आप लोगों से एक आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि स्क्रीन पे हमने देखा कि इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म को बहुत ही सराहा गया, ढेरों सारे अवार्ड भी मिले हैं इस फिल्म को लेकर. तो इंडियन ऑडियंस को लेकर कुछ प्रेशर फील करती है कि इंडिया में ये फिल्म नहीं, ये जरूर चलेगी. जहाँ पे भी आप रिलीज करो जरूर चलेगी, क्योंकि सबको उठ के देखना ही पड़ेगा कि ये आपकी फैमिली में भी हो सकती है. ऐसा नहीं है कि ये फैमिली यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को में है, सिलिकॉन वैली में है तो वहीं पर होता है. नहीं, स्टैटिस्टिकली आप बोल सकते हैं कि हाँ, यू नो 1 out of 9 Americans over the age of 12 are on antidepressants, you know, which is a staggering, but that हम लोग बोलते हैं अमेरिका में. नहीं, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है. तो स्टोरी चाहे वहाँ पे सेट किया गया हो, लेकिन 120% लोग रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे हम सब अभी मॉडर्न फैमिलीज में हैं. आई नो दैट माई पीयर ग्रुप, मेरे जनरेशन के जो लोग हैं, अगर ये देखेंगे तो आई नो कि लोगों को थोड़ा झटका मिलने ही वाला है. ऑल्सो अवेयरनेस की बात है. हमारे हिंदुस्तान में अवेयरनेस नहीं है कि जैसे अब्रॉड में ये बोल रहे हैं कि एंटी डिप्रेसेंट्स लोग खाते हैं, उनको पता है कि इफ देयर इज डिप्रेशन वो चले जाते हैं साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को मिलने. यहाँ आने के लिए इतना मुश्किल है लोगों को. दैट इज वाई अवेयरनेस ये मूवीज के थ्रू ही हो रही है. एक फिल्म आती है ऐसी जो साइकोलॉजिकल बेस्ड होती है, इतनी अवेयरनेस हो जाती है कि बहुत सारे पेरेंट्स एंड यंगस्टर्स एंड adults start coming for help. And sorry, what's nice is the way that Sela has made the film. It's not, you know, she's not trying to push the topic down people's throats. It is real. It is real. It's you know, that's very realistic. I mean, the festivals that I've been to, and people who have seen it have come up to me saying this really could be happening in our family. It is not, you know, making the world look at it through rose-tinted glasses. It's real, and that's what people need to see. Actually, I had a screening where there were a lot of counselors, educators, teachers, and many of them came after and said this is so realistic. And actually, I was a little nervous because, you know, you want, that's your goal, but you don't know if you've reached that goal, right? So when all these, I saw these, the audience, I was really worried, but many of them said, oh no, this is so realistic. This is exactly how, you know, I've seen so many families like this. So. Last question. Sela, how did you come up for the cast? How you selected the cast? Cast, I have to say she's brilliant in the movie. That is why we are asking that was you. very, very hard actually, because I was looking in the U.S. I started in the U.S. I had a casting agent, and many of the male, especially the first person I cast was the lead actor, the male, and many of the males are typecast into these comedic kind of roles over there. You know, the American males of that age group. So I didn't want a comedian, you know, because you can't take him seriously. It's a very, very heavy role. And I wanted somebody who could play that whole range. Like, he has to be
this really, confident, competent CEO type, and then he has to be very vulnerable at the other end of the spectrum. So he has to play that whole range, So I looked there, and I didn't like anybody. And then I found Ali actually through IMDb, believe it or not. But I did a search, and I saw him, and then he sent me a tape, and he just blew it away, And then I started looking for the lead actress, and I used Nandini Shrikant, who's a local casting agent here in Mumbai, and she suggested Suchitra, and Suchitra just blew me away. I mean, she gives such a beautiful performance in this movie. It's just it's really worth seeing. Thank Yeah, you. no doubt. She gave me the two most difficult scenes. One was a 6-page scene and one was a 5-page scene. And I had to do that for my audition. And as she says, I nailed it. So I got it. Okay, last question, Mr. Chetan. Pooja, with time, do you think people from the film industry are coming up with their problems? Like even Miss Deepika Padukone also came up with this her problem. Do you think there has been a change with time? Yes and no. It's. I mean, I come from lineage where we never waited for time to speak our minds. It was when you're born to Mahesh Bhatt, you speak your mind. It's a genetic flaw. तो हमें तो कभी ये problem हुआ नहीं. In fact, opposite problem था. But I think it's wonderful to have women like Deepika. It's wonderful when my sister Shaheen, who is a sibling of today Alia and daughter of Mahesh Bhatt, sister Pooja Bhatt, to kind of come out and speak about this. But I do feel that we need to hear people in the public eye who are in mainstream Bollywood speak more about concerns that really, really affect us. I think that we're living in a time where young people especially are so manicured and they're so correct politically. There's never a hair out of place, there's never a quote out of place. And I think that somewhere along the line, when I today at 45, when I go to places and people ask me, why aren't you acting again? I say, why do you want me to act? Yeah, you can look at 25 other women who are much younger than me. They're like, no, we related to you. So, like my father said to us, he said, बेटा जब 26 साल के बाद अब आपके गाने बजेंगे ना, तब वो मेलोडी ने कहीं ना कहीं हार्टलैंड में कहीं जाके एक जगह बनाई है. So I think that, are we bleeding with our stars enough? Because they're not bleeding with their audiences enough. You're only presenting your best face to your audiences, to your fans. And your audiences love you more. Your fans love you more when you show your human side to them. When Imran spoke about his son's cancer, he kind of somewhere really, really made a place further in his fans' hearts than he had before by just merely entertaining them. Deepika seems more human, more identifiable, because she talks about something that a lot of young women out there probably deal with. So I would think that I would like to hear people today who are ruling the roost be a little bit more open about their frailties, because eventually our frailties are our strengths. So चित्रा, पर ऐसा नहीं लगता आपको कि जब लोग सामने आते हैं, फिर वो आजकल सोशल नेटवर्किंग ट्रोल्स शुरू हो जाते हैं, ये सब चीजें, तो लोग सहम जाते हैं बाहर आने में? Well, that's just it. I mean, you can't live your life thinking about the trolls on social media. That's why I am active, but not totally active. And you really can't live your life dependent on them. Otherwise, you're not living. Yeah, exactly. Yeah, you're not. It is up to you to live your life the way you want to. Be true to yourself. If you want to talk about it, great. Just talk about it. Don't be scared about anyone or anything, because who died and made them the judge? Who died and made them God to give opinion that you shouldn't say this, or we can exactly. और besides कि अगर एक शख्स वहाँ पे बैठ के anonymously सिर्फ मतलब गंदगी और मतलब ये फैला रहा है, तो कितना दुखी इंसान होगा यार वो. तो अगर हम सामने वाले को मतलब ह्यूमनाइज कर लेना, जैसे लोग बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड, अरे सेंसर बोर्ड तो इंसान से ही बना हुआ है ना, कोई मतलब बाहर मतलब आसमान से तो आदमी नहीं आया है ना, वो भी डरा हुआ है यार कि मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं साइन कर लूंगा. तो सब लोग 3 साल आगे सबको खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं. ह्यूमनाइज ईच अदर, अंडरस्टैंड कि वो ट्रोल बेचारा इधर किसी के पेरोल पे होगा, या बहुत ही तकलीफ में होगा, या उसका ग्रामर बहुत बुरा होता है मोस्ट केसेस. तो तब मैं तो आई डोंट इवन रिस्पॉन्ड कि अगर मैं एम अ ग्रामर नार्सी, आई एम सॉरी टू से दिस, अगर आपका ग्रामर सही नहीं होगा मैं आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती हूँ. So, I mean, that was meant to be a joke. Young man, don't look so serious. So, I'm just saying is that troll के जगह जरा आप अगर जाके बैठे और सोचेंगे कि troll जो है बेचारा कितने तकलीफ में होगा actually.
अपनी जिंदगी को कितना मतलब छोटा समझ रहा होगा कि सिर्फ वो आपकी जिंदगी को फॉलो कर रहा है और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है. बड़प्पन चाहिए ना तारीफ करने के लिए, किसी की बुराई करने के लिए, मतलब वो तो कोई भी कर सकता है. You know, so you need this is, I mean, love is an attribute for the courageous, not for the weak. So being able to stand by, step back, praise the other, you need to be a large human being for that. सबके मुंह से तारीफ नहीं निकलती है, दिल से तो बिल्कुल नहीं निकलती है. Okay, last question, Chaitanya Anna, please. Director Shaila, valley represents a geographical depression between mountains. Did you have that symbolic concept in mind when you titled this? Exactly. You're the only one who picked up on it, though. Oh, give it up for him, ladies and gentlemen. This is why I say we need to rewind and go back to the days when people read more into things that they should have. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. Before we sign off, a few of our friends came in a little late, so I'd love to show them the trailer once again, please. Like I said earlier as well, 40... May I ask you a question that's purely commercial? Sure. I want to know how much did it cost you to make this movie and how many days did you shoot it in? Boy, She shot it in exactly 21 working days. 21 You're kidding days. Me. No. The entire movie was shot in 21 working days. सवाल पूछा कि नहीं? And I'm sorry, but I mean, what kind of budgets for you have you worked with? It's less than $1 million. Let's put it that way. Yeah. Wow. And this is in locations around, not in like one place, one set, no. Locations. We were shocked. Me and Ali were completely shocked. We said, so, what? In 21 days she's finishing this movie because it's it's an incredible movie. But kudos, really. I'm still tired, let's put it that way. No, but that's amazing. That's for amazing. A first time and I think that just proves that your inner landscape was so, you just knew what that was, which is why you could kind of create it like that. So. And we feel very good making movies for 7.5 crores and in 45-50 days to learn from you. Okay, so we'll have a look at the trailer right now once again. Thank you, everybody. Ladies and gentlemen, 14th October. Thank you so much. Do you want to tell them something about the yes, premiere? 14th October at Juhu PVR is the screening. And 15th as well at Juhu PVR will be the premiere of The Valley. On the Mami website, you can find more information as regards tickets, etc., passes and tickets and what have you. So please. All right, ladies and gentlemen, so here goes. Here's the trailer. The trailer once again. A little bit about the film. For those who haven't seen the trailer, tell the audience what would you like to tell them about. Okay. So The Valley is about an immigrant entrepreneur in America, and his daughter, his life looks very ideal. He's made it, he's successful, and then his younger daughter goes away to college and she commits suicide. So it totally shocks him because he's disconnected. He doesn't understand what's going on in her life, and so he tries to find out what happened. And so it follows his journey, his trajectory, as he's searching for answers. So when you thought you have to make such kind of film and such strong concept film, when you thought you have to make such kind of strong concept movie, when you started everything for this? So the idea came to me almost 8 years ago. And it happened during this whole cluster suicide issue that happened in Silicon Valley. There were a string of suicides, one after the other, all in one high school. And it's supposed to be one of the best high schools in California, in the whole America, actually. So I was just thinking, why is this happening? And at the same time, I was raising my two children, and kind of seeing what they're experiencing. And so that's when I thought of the story. And then many things happened in my life. I had a brother who had a mental health issue, and he passed away, actually, right before I started writing the script.
And that just all that pain that I was feeling at the time, I think it went into the script. And so, you know, it became, he was a lot like the character Maya, like very, very, very sweet, very nice person, you know, really innocent kind of person. So his character kind of went into this other character for me, morphed into Maya for me, you know, I think. And so those two things made me write the script, and it was the impetus behind the movie. So ma'am, how does it feel like you are part of this movie? Like, it's damn beautiful. We have seen the trailer, and like it's really touched to our heart. So how does it feel? It's incredible. I mean, when I first got the script to read, when I first spoke to Sela on Skype, when she decided that I was going to do the movie, then itself I knew, when I spoke to her for the first time, I knew that she was a very sensitive person, you know, and you knew that any film that she would end up making, मैं जानती थी कि बहुत ही sensitive topic भी sensitive है, लेकिन बहुत ही sensitively ये address करेगी वो topic को. तो मैं बहुत ही खुश थी कि, you know, I've been given the role of Rupa, which is the mother, which there's a whole gamut of emotions. Obviously, बहुत guilt है. You know, she feels a lot of guilt because she doesn't have enough time for her daughter. She thinks that she's not been in touch too much with her daughter's life. The daughter finds out she's having an affair. Is it because of that? You know, all of that. So a nice range of emotions for Rupa's character. So and ultimately, when we went to the States to shoot it, Ali Khan, though I've known for 16, 17 years, so it was very, very easy to act with him as my husband. The other two actors she has got as the daughters, Salman Khan and Agnita Thakkar, who plays Maya. Brilliant actresses. One is from LA, one is from New York. And what a sensitive actress, the girl Agnita who plays Maya. We learned a few things from her. Frankly, there were times when Ali and me were discussing and saying, my God, we wouldn't have analyzed that the way she has. So her casting was absolutely brilliant. वो दिखते भी हैं जैसे हमारे बच्चे हैं. So it was wonderful to be part of it. काफी ज़्यादा मतलब मुंबई में ऐसा होता है, बड़े शहरों में भी ऐसा होता है कि हम डॉटर्स को या फिर बेटी या फिर बेटे को टाइम नहीं दे पाते, तो एक अवेयरनेस होगा सभी लोगों के दौरान. अवेयरनेस तो होगा. एक तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक आज के दौर में जब न्यूज़ भी एंटरटेनमेंट हो गया है, फॉर अ फिल्म मेकर टू चूज टू मेक अ मूवी अबाउट अ टॉपिक लाइक दिस इज़ वेरी वेरी ब्रेव. सो आई अपलॉड यू एंड आई अपलॉड माई फ्रेंड सुची फॉर काइंड ऑफ पोरिंग अ हार्ट आउट इन द ट्रेलर दैट आई सॉ. आई थिंक डिप्रेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में हम बातें नहीं करते हैं. और एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव होता है जब एक फेमिनिन पर्सपेक्टिव आप सुनते हैं, और लड़की भी जब जिसकी मौत है, एक यंग गर्ल की सुसाइड होती है. सो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी यूनिक. आई थिंक दैट इट्स समथिंग दैट वी मस्ट सपोर्ट. जब मैंने अपनी फिल्म करियर एज प्रोड्यूसर शुरुआत की थी, मैंने तमन्ना बनाई थी जो फीमेल इन्फेंटिसाइड पे थी. उस टाइम पे मैंने मीडिया के लोगों को फ़ोन करके कहा कि मैंने देखो दिल से, शिद्दत से एक फिल्म बनाई है इस ऐसे टॉपिक पे जो मेरे लिए बहुत मायने रखती है. अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ भी सच है तो प्लीज़ मेरा मैसेज जो है आप आगे बढ़ाएं. तो मैं उनकी बिहाफ पे, ये बहुत ही शाय होगी, अमेरिकन भी है आदि, तो मांगेगी नहीं ऐसे. मैं उनके बिहाफ पे आप सबको बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने खुद की ज़िंदगी में आप इस दौर से गुजरे हैं जब भी आपको भी तन्हाई महसूस करना पड़ा, आप भी अकेले अपने आप को महसूस किया, आपको भी डिप्रेशन हुआ है, तो प्लीज़ इस फिल्म के मैसेज को आप आगे बढ़ाइएगा. क्योंकि हम बातें करते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में, मगर देखते कुछ और हैं. हम बोलते हैं कुछ और हैं और करते कुछ और हैं. जो हम छुपाते हैं वो हम होते हैं. तो आई थिंक कि ऐसी जब ये एक फिल्म बनती है, जब भी हम आज के दौर में, जब भी सोशल मीडिया पे हम कुछ और चेहरा दिखा रहे हैं और एक्चुअली अंदर कुछ और ही हैं, ऐसी फिल्म की ज़रूरत है. एंड वी नीड टू अपलोड देम. 21 दिन में फिल्म बनाई है, अभी जान लोगे क्या आप लोग? जान लोगी ऑडियंस. आई थिंक वी मस्ट गो आउट एंड सपोर्ट दिस बिकॉज इट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट मोर. अवार्ड मिलेगा तब जब हिंदुस्तानी ऑडियंस भी जाके इस फिल्म को देख के एक टॉकिंग पॉइंट बना देगा. आप मानते हो कि ऑडियंस आजकल स्मार्ट हो गई, कंटेंट ओरिएंटेड? ऑडियंस हमेशा स्मार्ट थी. हम जो सपोजिटली फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, हम काफ़ी ऑडियंसेस को अंडर एस्टिमेट करते हैं और कहते हैं कि वो तैयार नहीं है. बात आज ऑडियंसेस और फिल्म मेकर्स के बारे में नहीं है. बात प्रॉब्लम आज एक मार्केटिंग का गेम हो गया है. कि आप कितनी भी अच्छी फिल्म बनाएं, क्या आपके पास ऐसे बजट्स हैं जो कभी कभी एक बहुत ही बड़ी मगर वाहियात फिल्म के पास होती है जो वो आपको मतलब सुनामी की तरह ड्राउन आउट कर दे. इसलिए आप सबकी मदद ऐसे दौर पे मैं बिना झिझक के मांग सकती हूँ. क्योंकि अगर एक कमर्शियल फिल्म बनी थी जहाँ पे हमारा या इनका एक ही एक यू नो द गोल वाज कि ओनली टू मेक मनी,
then I wouldn't be asking this. I think कि अगर इस औरत ने अपनी खुद के पैसों से एक ऐसी सेंसिटिव फिल्म बनाई है, ऐसे सब्जेक्ट पे जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, और हम इस मैसेज को आगे नहीं लें, तो फिर लानत है हम सब पर. Thank you very much. अपनी दुनिया में अगर कोई एक्चुअली रियल लाइफ पटाखे हों, उन्हें प्लीज सेलिब्रेट करें. पटाखे जलाए ना, अपने रियल लाइफ पटाखे को सेलिब्रेट करें बस. वो तब रिलीज होगी जब भी मेरे जो पार्टनर्स हैं श्री भूषण कुमार जी और श्री ब्रेव्स जी फेयरली और ट्रांसपेरेंटली मेरे सारे वर्कर्स के पैसे रिलीज कर दें, मेरे कॉपीराइट को वायलेट ना करें, तब रिलीज होगी, वरना नहीं रिलीज होगी. थैंक यू वेरी मच.